Hello, children. How are you all? I hope everyone is safe at home. Right, children? Now, children, welcome back to English class. Quickly get with your English notebook, sharpen pencil, and your eraser. Okay, children? Today we are going to learn a new letter. Okay, new four letters, that is small e, small f, small g, and small h. Okay, children? आज हम न्यू लेटर्स सीखेंगे स्मॉल लेटर्स स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी और स्मॉल एच ओके तो सबसे पहला हम देखेंगे कि स्मॉल ई कैसे लिखते हैं ओके फर्स्ट वी विल सी हाउ टू राइट स्मॉल ई ओके तो स्मॉल ई will come in two blue lines okay you all will write small e between two blue lines okay children तो आपको स्मॉल ई कहाँ लिखना है रेड लाइन के बाद जो टू ब्लू लाइंस आता है वहां पर आपको लिखना है ओके तो लेट्स सी हाउ टू राइट स्मॉल ई ओके तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ लूप ओके लाइक दिस then you have to make a half curve bring it down till the second blue line okay first you have to make a loop like this okay then you have to make a half curve okay and bring it down till the second blue line this is your small e okay small e लिखने के लिए आपको सबसे पहला लूप बनाना है ओके फिर उसके बाद आप क्या करोगे आप हाफ कर्व करोगे और सेकेंड ब्लू लाइन को टच करोगे ओके दिस इज योर स्मॉल ई ओके यू ऑल हैव टू राइट स्मॉल ई बिटवीन टू ब्लू लाइंस ओके आपका जो लेटर स्मॉल ई है वो टू ब्लू लाइंस के अंदर होना चाहिए ओके यू ऑल हैव टू राइट स्मॉल ई between two blue lines okay first you have to make a loop like this okay then you have to make a half curve bring it down till the second blue line okay this is your small e okay now we will move forward and see how to write small f okay on the red line you have to make a half curve like this then you have to make a standing line till the second blue line okay and you have to make a sleeping line on first blue line like this okay first you have to make a half curve okay and this half curve will touch the red line okay children then you have to come down by making standing line like this till the second blue line okay children then you have to make a sleeping line on first blue line like this okay children first आप क्या करोगे आप ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है आपको वहां पर आप हाफ कर्व करोगे ओके ये रेड लाइन को टच होगा हाफ कर्व ओके फिर आपको नीचे आना है by making standing line okay like this till the second blue line okay children then you have to make a sleeping line on first blue line this is your small f okay children while writing the letters you have to say and write okay so first you have to make a half curve okay and this half curve will touch the red line okay children then you have to bring it down till the second blue line like this okay then you have to make a sleeping line okay on the first blue line okay children and you have to keep in your mind that half curve and sleeping line will not touch each other okay जब आप स्मॉल f लिखते हो तो ये जो स्मॉल f का जो कर्व है और स्लीपिंग लाइन है ये एक दूसरे को टच नहीं होना है ओके यू ऑल हैव टू राइट स्मॉल f इन दिस मैनर ओके जैसा टीचर ने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है ओके चिल्ड्रन now we will move forward and see how to write small g. Okay. For small g, you all have to go from blue line to red line. Okay. तो सबसे पहला हम क्या करेंगे हम लिखेंगे हम करेंगे half curve. Okay. First you have to make a half curve between two blue lines. Okay. Then you have to close the half curve by making standing line like this till the red line. Okay, children. Then you have to make a half curve okay and this half curve
You have to leave. Okay, आपको टच नहीं करना है, आपको ऊपर लेकर नहीं जाना है, आपको सेकेंड ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में आपको इसको छोड़ देना है. ओके, ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आया? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप हाफ कर्व करोगे. ओके, ठीक है. फिर उसके बाद आप ये हाफ कर्व को क्लोज करोगे बाय मेकिंग स्टैंडिंग लाइन. ओके, till the red line. Then you have to make a half curve, and this half curve will not touch the second blue line. आपको ये इसको बीच में ही छोड़ना है. ओके चिल्ड्रन, in this manner you will write small g. ओके, सबको समझ में आया? Did you all got it? How to write small g? One more time, teacher will show you how to write small g. See properly and write in same manner. Okay, children? First you have to write, first you have to make a half curve. Okay, from two blue lines. Okay, you all have to make a half curve between two blue lines like this. Okay children, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप half curve करोगे two blue lines के बीच में. Okay, then you have to make a standing line from red line to blue line. Okay, from blue line to red line. Okay, from blue line to red line. आपको क्या बनाना है, आपने कर्व बनाया, ठीक है, आपने टू ब्लू लाइंस के अंदर आपने कर्व बनाया है. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये कर्व को क्लोज करना है. तो आप कहाँ से मतलब आप कैसे क्लोज करोगे, आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना है. ओके, तो स्टैंडिंग लाइन आप कहाँ से बनाओगे, सेकेंड ब्लू लाइन से. कहाँ से बनाओगे, second blue line से. Okay, you all have to make a standing line from second blue line to red line. Okay, then you have to make a half curve. Again you have to make a half curve and leave it. Okay, and this half curve will not touch the second blue line. Okay, ये जो half curve है वो second blue line को touch नहीं होगा. Okay children, this is your small g. You have to write slowly and neatly. Okay children, now we will move to our next letter, that is small h. Okay, first you have to make a standing line from red line to second blue line. Okay, then you have to make a half curve. You have to make a slightly curve on first blue line. Okay, आपको slightly half curve बनाना है first blue line में. Okay, first blue line को ऐसा touch होना चाहिए half curve. Then you have to make a standing line till the second blue line like this. Okay, first you have to make a standing line from red line to second blue line. Okay, on the first blue line you all will make a half curve like this. Okay, then you have to bring it down till the second blue line by making standing line like this. Okay, this is your small h. Okay, small h के लिए आपको रेड लाइन से लेकर सेकेंड ब्लू लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना है. ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप हाफ कर्व करोगे. ठीक है, आपका ये जो फर्स्ट ब्लू लाइन पे आप हाफ कर्व करोगे, फिर उसके बाद आपको नीचे आना है till the second blue line. For that you have to make a standing line like this. Okay children, first you have to make a standing line. Okay, from red line to blue line. Then you have to make a half curve from the first blue line. Okay, then you have to come down till the second blue line by making standing line. Okay, like this. This is your small h. Okay children, so in your English notebook you all will write two pages. On the first page you will write small e, small f, small g and small h. Okay, then you all have to revise small a, small b, small c, small d on the second page. Okay, homework for today is two pages. On the first page you will write small e, small f, small g and small h. Okay, on the second page you will write small a, small b, small c and small d. Okay children, I hope you all understood how to write small e, small f, small g and small h in your English notebook. Right children, bye, have a nice day.